So very good evening to all of you. So this is the last session on chapter number 3, lean system and innovation. Okay, beta, I think in the last session I have given you a question on TPM, total productive maintenance. How many students have completed that question? Rashmi, good evening. I have given you a question in the last session, beta. If there is any difficulty in solving that particular question, I hope that each and every student has completed that particular question of TPM. And I also told you that it has been asked in the examination for a straightforward 10 marks. 3 requirement parts are there and it has been asked for 10 marks. How many students has completed that one? Please revert to me. Okay, 5 students have completed and they are not having any doubt in that. Okay, very good. What about other student? Any doubt in that particular question of TPM? Okay, so let's first revise what we have studied in the last session, and then we will move towards the last topic of this particular chapter, chapter number 3. So in the last session, we have started the third technique of lean system known as 5S. The most important words are workplace management. 5S is a technique of workplace management in which whether the machineries we are talking, whether the tools and fixtures we are talking, or in the office we are talking about the files, whether it is a soft copy or hard copy. Okay, all needs to be properly arranged so that the effectiveness and the efficiency of the staff will definitely improve. That will lead to minimization of waste, that is non-value added activity. So 5F, the first S is sort, S-O-R-T. It means sorting the necessary and unnecessary documents, tools and fixture, and keep only the necessary documents in the on FIFO basis. Second is set in order. A very important dialogue we have written in our copy that there should be place for everything. अगर आपको लगता है कि वो equipment, tools, die, fixture, or the office document are necessary, then this thumb rule is to be followed, that there should be place for everything and everything should be in its place. It means जो जो आपके पास इक्विपमेंट टूल्स डाइव है सबके लिए प्रॉपर प्लेस आप आइडेंटिफाई कीजिए. Once place has been identified, then whenever worker has used that equipment, tools or dive, the same place location has to be put on. Otherwise, the benefit of 5S will not be there. So there should be place for everything and everything should be in place. Okay. Now the third point, that is shine. Can you tell me, beta, whether the shine covers the cleaning of machine? Yes or no? Whether the shine covers the cleaning of machines, servicing of machine? Yes or no? Sudhir, good evening. Please revert with the answer. Whether the third F, that is known as shine, covers the cleaning of machines? Yes, it covers not only the floor cleaning, table cleaning, but it also covers the cleaning of machine on a day-to-day basis by the operator itself. Okay, next one is standardize. Whatever first 3 F are, sort, set in order, shine, standard operating procedure, SOP, will be derived for the above 3 F. This will be the work of standardize. And the last one is sustain. It means whatever you are carrying your target, you have to check whether we are able to achieve that target of minimization of waste or not. If there is any improvement required in the first 3F, sort, set in order, and shine. Okay, so very, very, very important concept, but a very simple concept. Whenever asked in the examination, it is expected that students should get 100 out of 100 in that particular question.
Okay, chaliye. Next topic we have started TPM, total productive maintenance or total preventive maintenance. क्या था बेटा TPM का full form? What's the full form of TPM? Whether it's total productive maintenance or total preventive maintenance? It's total productive maintenance. Normally, whenever we heard the word maintenance, we generally thought of the scheduled maintenance or the ad hoc maintenance. Ad hoc means whenever needed. But TPM is much beyond the machinery. Not only it covers the machinery, but it also covers the employees of the organization. It also covers the process that is required to minimize the waste, that is the non-value added activity. So it's the medical science of machine. Not only it involves the machine, it involves the process, but also the employees. Okay. Now there are total 8 pillars of TPM. Can you recall those 8 pillars, beta? Don't answer to me. Just I'm giving you 30 seconds to 1 minute. Test yourself how many pillars you can recall out of that 8 pillars of TPM. I'm giving you some time, 30 seconds to 1 minute to recall. Don't turn the page, beta. Anna. It will not benefit you. Just try to recall the memory. What are the 8 pillars of TPM? What are the 8 pillars of TPM? I think you can easily call the first 3 or 4 pillars, better. They are comparatively easy to remember. Okay, so I start. The first one is autonomous maintenance. The second one is planned maintenance, or we can say the scheduled maintenance. The third one is quality maintenance. Next is early equipment management, focused improvement, that is Kaizen costing, and 6 and 7 are related with employees. Employees education and training, employee health, safety and environment, and the last TPM is related with office in TPM. So the very first pillar is autonomous, means the worker who is operating the machine should be given the responsibility, should be given the duty to do regular maintenance on its own without need to call the dedicated maintenance staff. Okay, then just recall on your own, beta, what is the technique to calculate the efficiency and effectiveness of TPM? What that technique is known as? Please try to recall. Once again, I am giving you time to recall the same, because I think there is a time gap of 3 to 4 days. So might be you forgot something about that concept. What is the technique through which we measure the efficiency and effectiveness of TPM? It's known as OEE, overall equipment effectiveness. OEE is a multiplication of 3 ratios. Recall, beta. Just recall. What are those 3 ratios? OEE is a multiplication of 3 ratios. Don't answer to me. Just I'm giving the time so that you can recall on your own what are those 3 ratios through which we calculate the OEE, overall equipment effectiveness. The first one is availability ratio. The second one is performance ratio. The other name can be called as speed ratio. Then the last one is known as quality ratio. Okay. So how to calculate the availability ratio? First of all, actual time will be taken. How much time the machine is actually available for use? The machine was actually available for use. That was considered. And the other thing was, whatever theoretical time we are having, we will deduct normal idle time out of that. Once again, beta, whatever theoretical time we are having, suppose company works for a single shift. A single shift consists of 8 hours. So theoretically, we are having 480 minutes of working.
but practically it's not possible to work each and every minute out of that 480. There has to be some normal idle time. So out of that time, when we deduct the normal idle time, we will get the planned available time. This is the time through which the machinery will be available for production. This planned available time should be compared with the actual available time. Okay. Now, once again, recall one thing, beta. What is the difference between planned available time and the actual available time? Suppose the planned available time is 400 minutes. The actual available time is 380 minutes. So this 20-minute difference, what can we call the 20-minute difference? The planned available time is 400 minutes, while the actual available time is suppose 380 minutes. So the difference of 20 minutes is called dash. I'm waiting for your answer. Okay. Please revert fast, beta. Okay, abnormal idle time. Very good, Aniket and Sandhya. Very good, beta. So the difference between planned available time, that is the time during which machine should be available for use, and the actual time is known as abnormal idle time. Okay, it will be clearly given in the question. Okay, so the now suppose the OEE of the organization is 78%. Now, question have asked you how to comment on OEE of the organization. Can you tell me the base through which we will comment on OEE of the organization, which comes out to 78%? Can you name that technique, beta, through which we can comment on whether the organization OEE is up to the mark or not? What is that technique known as? Okay, beta, very good. It's known as world-class performance. Some ratios have been given through which they are the benchmark through which we will compare a company's performance. Overall OEE should be equal to or greater than 85%. OEE of the organization should be equal to or lower than, or more than 85%. Then it is called as, yes, you have achieved the benchmark or even crossed the benchmark globally. Second point is 90%, 95%, and 99%. These are the world-class performance ratio. These are the benchmark through which we have to compare your organization performance. That the availability ratio should be more than 90%. The performance ratio should be more than 95%, and the quality, that is the output, good output generated, should be more than 99%. Anything below that would require significant improvement in the organization. So it's not possible that an organization has implemented TPM and just in the very first year it can achieve the world-class performance. It's a journey, beta. You have to rectify your mistake, find out the root cause analysis so that the same mistake cannot be repeated in the future. चलिए बेटा, है ना? Now, any doubt in the last session lecture? Hope we have revised each and every content of what we have studied in the last session. Okay, can we move further, बेटा? चलिए, तो heading दीजिए आप अपनी कॉपी में. The last technique of lean system is Six Sigma. And what is the objective of lean system? The objective of lean system is minimization of waste without affecting the quality and functionality of the product. Okay,
Please give the heading in your copy. Six Sigma. Okay, what this topic is about? Its topic is achieving zero defect. Now, let's recall the definition of lean system. I'm giving you 30-second beta to recall the definition or objective of lean system. And then I will link the objective of Six Sigma with that. What is the objective of lean system? It's minimization of waste or elimination of waste. It's minimization of waste. Whether we are applying the just-in-time technique or we are applying the Kaizen costing, 5S or TPM, this all the four techniques are related with achieving the objective of lean system, that is minimization of waste, not the elimination of waste. But something unique about the last technique of lean system, that is Six Sigma. It doesn't have an impression of minimizing the waste or minimizing the defect. It believes in total elimination of defect. Once again, I'm repeating, but please link the main objective of lean system, and then we will compare the objective of Six Sigma to have a better understanding of this technique. Lean system objective is minimization of waste. It's not the elimination of waste, that is non-value-added activity. While the objective of Six Sigma is one of the techniques to achieve the objective of lean system. While Six Sigma is much more aggressive, it doesn't believe in minimizing the error, minimizing the waste, minimizing the non-value-added activity. It believes in zero defect policy. There should not be defect at all. This is the basic aggressiveness of the Six Sigma. Please write down, beta. First point. Hope you are given the heading in your copy, Six Sigma. Now write down the very first point, objective. The objective of lean system is minimization of waste. The objective of lean system is minimization of waste. Comma, while Six Sigma is one of the technique of lean system, comma, is much more aggressive. Its objective is, write down in inverted comma, having zero defect policy. Its objective is having zero defect policy. Now, a natural question arises for whether it's possible to achieve zero defect policy. Yes, many companies worldwide have implemented Six Sigma and practically achieved a zero defect policy. In India also, there are many companies. One of the famous companies are Reliance,
Tata, Aditya Birla have already implemented Six Sigma and are having a zero defect policy in some of their process, not entirely in the organization or in the group, but some of the process are totally defect free due to the implementation of Six Sigma. Okay, so this is the very first point. The lean system is having the objective of waste minimization, while lean Six Sigma is one of the techniques through which we can achieve the objective of lean system, but Six Sigma is much more aggressive. It believes in zero defect policy, that is avoiding the defect completely in the organization. Okay, now let's talk about the origin of Six Sigma. Origin of Six Sigma. You have heard this company name Motorola. Okay, we have heard this name only in the telecom sector, but basically it has multiple portfolio products in its organization. Basically in America in 1986, Motorola company is facing tremendous quality issues in the sale of television sets. Motorola at that time and America also sold the television sets. They are facing tremendous quality issues. More than 90% of their volume fall down, market share fall down only and only due to the quality issue. Now, an engineer known as Bill Smith, has practically adopted this technique of this theory of Six Sigma in the Motorola organization, and in a time span of 8 to 10 years. Yes, it's not a 1 year job. It will take time, because suppose you are having a multiple defect right now, say 10%. It's not practically possible that by implementing Six Sigma in the very first year, it's a miracle you can achieve the zero defect policy. Originally, the originator itself took 8 to 10 years to achieve the improvement required to say that yes, we are the Six Sigma compliance company. So Motorola company has started this concept of Six Sigma in the year 1986. The Motorola company television set market has been fallen down by more than 90%, and it took 8 to 10 years by engineer Bill Smith so that the quality can further be built up and customer satisfaction can be regained by the Motorola company. And after 8 to 10 years, their quality issues have completely been eliminated. So basically, the key of Six Sigma is zero defect policy. But the name, the famous worldwide, it has been famous when General Electric Company of America has adopted this concept in the year 1995. Although originator is the Motorola company, but this concept has been made famous by General Electric Company of America, who has implemented this technique in the year 1995. Okay, although there are some other name also. I already told you that in 1986, Six Sigma has been formulated by Bill Smith. Okay, in 1998, they have reduced much defect as compared to the 1986 data. And then a company known as Honeywell has also adopted the same. But this concept has been famous by the company known as General Electric Company of America when they implemented the Six Sigma technique. Okay, please write down in your copy, beta. Second point, origin. Second point, origin. Please write down origin. This concept was first introduced by the Motorola company
by Motorola company through its engineer Bill Smith, SMITH. Full stop. But later on, the popularity has been gained by, but later on, comma, General Electric Company of America has made this concept popular. But later on, General Electric Company of America has made this concept popular in the year 1995. In the year 1995. क्लियर बेटा? नाउ अब आइए आप अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या है. The first point is very, very important. The same language has been given in the study material also. I am giving you 2 minutes of time to just interpret 2 lines. Very, very important lines of Six Sigma. The whole concept of Six Sigma has been summed up in this 2 lines. So I'm giving you 2 minutes, Peter, to have a reading of this first point. What do you mean by Six Sigma? It's a quality improvement technique whose objective is to eliminate defect in any aspect that affect customer satisfaction. Okay, so I'm giving you 2 minutes. Have multiple reading of this 2 line and try to cover the interpretation of each and every word intentionally used in the definition of Six Sigma. So I'm giving you 2 minutes, beta, to have an interpretation reading of the very first point of the definition of Six Sigma. Please read out that line very, very carefully, beta. It is some keywords through which we will decide what's the objective, what the meaning of Six Sigma, what it wants to achieve.
Okay, beta, can you tell me what are the key words that has been used in the definition part of Six Sigma? The first word is, it's not quality maintenance technique. It's quality improvement technique. It's quality improvement technique. When you see prima facie, it contradicts the objective of lean system. The objective of lean system is minimization of waste. The objective of lean system is minimization of waste, minimization of non-value added activity. It has nothing to do with improving the quality of the product. But this technique, not only it will minimize, not only it will eliminate the defect. When they eliminate the defect, that creates customer dissatisfaction. Indirectly, it amounts to increase in the quality of the product. So out of all the technique of lean system, this technique not only eliminate the defect, not only eliminate the waves that affect the customer satisfaction, but thereby resulting in increase in the quality of the product. ये बहुत बहुत important point है. When you see the just-in-time system, when you see the Kaizen costing, when you see the 5F, when you see the TPM, they are all oriented towards minimizing the waste. Those four techniques have nothing to do whatsoever with increasing the quality of the product. But this technique not only eliminates the defect, but it also results in increase in customer quality, increase in product quality. Okay. So what are the definition? It's a quality improvement technique. The word important is improvement. The objective is not to minimize the defect or control the defect. The objective is to eliminate the defect. Now, the natural question arises, which type of defect? Every defect that affect customer satisfaction. So basically, it's a customer-centric process. Whatever defects are creating customer dissatisfaction, that has to be completely eliminated, not only resulting in elimination of waste, but at the same time, since customer satisfaction are improved, we can say it's a quality improvement technique. Okay, beta, very, very important definition. I want every student to write on their copy through red pen, beta. Please write down. It's a meaning. Pehले give the heading, meaning. It's a quality improvement technique. It's a quality improvement technique whose objective it's a quality improvement technique whose objective is to eliminate defect whose objective is to eliminate defect in every area that affect customer satisfaction. सो ये पॉइंट क्लियर है बेटा आपको? यहां पे हम क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं. वी आर नॉट हियर टू मिनिमाइज द वेस्ट. Six Sigma will eliminate the defect in every area that affect customer satisfaction. Okay. Now, next point. By measuring the defects in a process, this concept believes that by adopting the proper procedure, by adopting the proper mindset, we can practically achieve the zero defect policy. So
Basically, this technique totally depends on statistical data. If the quality of the data is there, definitely we can have enough quality data, then we can work on that data through which we can practically achieve the zero defect policy. Okay, now moving further. The concept is Six Sigma. Now, what is Sigma? Sigma is a statistical term that measures how far you deviate from the perfection. How far you deviate from the perfection. जितना आपका perfection close होगा, higher the sigma number. Once again, I am repeating. Six Sigma word concept है. What do you mean by sigma? So sigma is a statistical term that measures how much a process deviates from the perfection. है ना? Process जितना perfection से pass होगा, that means we have more sigma level. जैसे अगर 6 sigma है, it means there is almost no defect. There is practically zero defect policy. Suppose the sigma level is 2 sigma. It means this is the perfection level, while the process has to make a long way to reach near to perfection. So higher the sigma number, higher will be the quality of the product. That is, lower the number of defects in the product. Please write down in your copy, beta. Meaning of sigma. Meaning of sigma. Sigma is a statistical term. Sigma is a statistical term that measures how far a process deviates from perfection. How far a process deviates from perfection. Okay, beta. So, अगर मैं if I talk about today's paper, है ना? Do you want discussion on today's paper, beta? First of all, tell me. Do you want some discussion on today's paper of SCMP November 2022? Please revert with yes or no. Okay. So, beta, right now we are at the age of completing the first 3 chapters, and you are surprised to know that in November 2022, the first 3 chapter carries almost more than 45% marks. The first 3 chapter, okay. The very first question is a compulsory question. You all know that particular question belongs to chapter number 1, Introduction to Strategic Cost Management, and that to 20 marks question. Okay. For what the concept has been asked, we already know that there are 3 generic strategy: the low cost advantage, the differential advantage. So basically, the first question relates to chapter number 1. Then we have also discussed the TPM question. Sorry, not TPM, the just-in-time system, है ना? Just-in-time system का जैसा study material में एक question था, almost similar, 99% similar question has been asked in the current attempt of November 2022. So वो एक question पूछा गया. In chapter number 2, we have covered a topic known as throughput accounting. Okay,
So a question has been asked related to throughput accounting, and almost similar question has also been asked in the past examination. So you will be surprised to know how much marks the first 4 chapters are carrying in your examination, along with chapter number 7, performance, measurement, and evaluation. If we talk the ABC of this SCMP paper, na beta, if you want to analyze the ABC, what are the most important chapters? Mind it, beta, each and every chapter are important, each and every concept are important, but there has to be some smart work along with the hard work. Okay, so what you want to do in this paper, that is take 3 or 5 attempt paper, hard copy with you, analyze the pattern of that paper, that in out of 120 marks paper, including the objective, 116 or 120 depends upon the paper setting. So out of that marks, how many marks are devoted to each and every chapter? You will be surprised to know that chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4, and chapter number 7, that is performance, measurement, and evaluation, carries almost 50% marks of your entire syllabus. I'm not telling that other chapters are not important, they are equally important, but you have to be smart enough to focus more on this particular chapters which are carrying a more technical topics, and therefore they are having more weightage in the examination. Okay, so we are having a total of 11 chapters. Okay, so what should be your strategy? Seeing the paper, when you see this November 2020 paper or May 2022 paper or December 21 paper, one thing is common among all. अगर आपके माइंड में ये है कि बेटा SCMP theoretical paper है, then please look out for the recent paper. Although in May 22 also it's not a theoretical paper, in December 21 also it's not a theoretical paper, but जो recent होता है ना वो हमें ज्यादा confidence देता है. So just look at the November 2000 paper. When the session is over, you will find that yes, it's not a theoretical paper, it's a application based paper. Okay, so पहला mindset आपको इस पेपर में ये रखना पड़ेगा, we are not bugging up the theory, we are understanding the theory so that we can apply on a given situation, on a given case scenario, on a given case study, है ना? So पहला mindset ये clear हुआ बेटा. Second point, जब भी आप इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं ना, make preparation in that process कि what are the important questions, जो important words है, technical definition, just as the running Six Sigma, important word for quality improvement technique, important word for elimination, important word for customer satisfaction. So these keywords must be there whenever a question has been asked from Six Sigma. Otherwise, although your answer is correct, but it's not up to the professional mark. So जब आप पहली बार ये सब्जेक्ट इस बैच के बाद पढ़ रहे बेटा, right from now you have to prepare yourself that what should be read out in the first revision, what should be the read out in the second revision, and what should be read out in the last day before revision. है ना? From my personal experience बेटा, this final is all about revision. The number of time you revise a particular subject, the more confidence it will provide to you. And always remember, particularly in this subject बेटा, जब भी कोई कंसेप्ट आप पहली बार पढ़ते हैं, it's not at all possible कि वो कंसेप्ट आपको पहली बार में ही 100% आ जाएगा. But if you are determined, then definitely no concept is tough. If you once again revise that concept, understand that concept in a proper manner, definitely some concept may take a single reading to be comfortable, some concept may take 2 or 3 reading to be comfortable. So मुद्दे की बात ये है बेटा, सभी chapters important है, all the 11 chapters are important, but smart work is also required. You have to identify which chapters are important. As per my personal opinion, this is not the ICI opinion, this is a personal faculty opinion based on the experience of teaching this subject since years, that chapter number 2, 3, and 4, and especially chapter number 7 are the most important chapters in your syllabus.
almost cover 50% out of the 120 marks including the choice question. ये इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बोला, आपको अभी से ही सेशन के ड्यूरेशन में ही क्या करना चाहिए बेटा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन दैट यू आर डूइंग इन योर फर्स्ट रिवीजन. You have to highlight each and every important point. I would not suggest that making a concept copy right now. If you are having attempt in May 2023, strongly I would not recommend to make a concept copy because it will take much time, but the result is not up to the time devoted to it. So highlight the important point. वही मॉड्यूल में जो important keywords है वो लिख दीजिए आप. इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए. When you make the first revision, जब आप first revision अपना करेंगे just before 3 months before examination, first revision जब आप करेंगे, उस revision में आप तैयारी करें कि which question you have to dealt with in the second revision. इसी प्रकार से when you are going through your second revision, you have to do marking. What are the question, what are the concept which I must go through in the last day before examination. So basically 2 revision are needed. They are the bare minimum. But if you can do 3 or 4 revision, it will do wonders to your mark. CA final is all about revision, revision, revision. Because all the subjects are very vast, you can retain each and every concept only on the basis of conceptual clarity and revision. Okay. So जब भी इस टाइप का पेपर, जो आज का पेपर था बेटा, the first question almost carry 20 marks. It's a single question, it's a case study question. So it's not necessary in the examination that you should attempt the very first question in the very first instance. बिल्कुल भी नहीं. You can start from question number 2, you can start from question number 3, you can start from any question. The question which you are familiar with should be the first question in your answer sheet. बिकॉज अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जो आपको कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं है और वो लेंदी क्वेश्चन है, जैसा इफ अटेम्प्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन का, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, इट रिक्वायर्स मिनिमम 3 रीडिंग सो दैट यू कैन रिप्लाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो 3 रीडिंग लगाना, इट विल टेक मिनिमम 20 to 25 minutes of interpretation reading. Then you have to draft the question and then you have to write down that question. It will take time. तो जो पैनिक बटन होता है ना, फिर लगता है कि टाइम बहुत कम बचा है जबकि हमारे मार्क्स अभी अटेम्प्ट करना बहुत बाकी है. डोंट डू दैट. आप वैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करिए जो आपको आता है. इन द फर्स्ट आवर ओनली दोस क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्टेड ऑन द कंसेप्ट विच यू आर वेरी कंफर्टेबल विद. जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगता है, जो भी क्वेश्चन आपको जो कंसेप्ट आपको दिक्कत देता है, डू दैट कंसेप्ट इन द लास्ट 40 to 45 minutes. Nothing to lose there because you have already attempted 60 to 70 marks paper in those 2 and 2.5 hours. अब जो लास्ट के 40-45 मिनट्स आपके पास बचते हैं, उनमें वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए जो आपको टफ लगते हैं और विच आर लेंदी इन नेचर, है ना. सो द क्रक्स इज बेटा, दिस आर नॉट द थ्योरेटिकल पेपर, दे आर द एप्लीकेशन बेस्ड पेपर एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल. मैं बार बार ये सब्जेक्ट हमेशा बोलता हूं. कुछ बच्चे बोलते हैं सब्जेक्ट बहुत टफ है. ये सब्जेक्ट टफ कब होता है बेटा, जब स्टूडेंट रटना चालू करता है चीजों को. आई वंस अगेन रिपीटिंग, जब स्टूडेंट रटना चालू करता है ना बेटा, तब ये सब्जेक्ट टफ होता है. क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, यू रीड आउट द क्वेश्चन एंड ऑलमोस्ट जो बच्चों को ये सब्जेक्ट टफ लगता है ना, व्हाट कॉमन मिस्टेक दे आर डूइंग, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्या कॉमन एरर करता है बच्चा इसमें जिसके कारण ये सब्जेक्ट उसको हमेशा टफ लगता है इवन ऑन दोस 3 आवर. जब भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अभी आप इन सेशन के थ्रू ट्रेनिंग ले रहे हो कि कंसेप्ट क्या है, कैसे हमें प्रोसीड करना है सब्जेक्ट को, तो कंसेप्ट ट्रेनिंग में हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, डोंट स्पून फीड योरसेल्फ. अगर आप अपने आप को स्पून फीडिंग करेंगे ना बेटा, इट विल नॉट बेनिफिट इन योर एग्जामिनेशन. Whenever you start a question, first have a newspaper reading of that question, then have a interpretation reading of that question. जब ये खत्म हो जाए, give yourself minimum 10 minutes. Give yourself minimum 10 minutes to have a framework of what you should write in this particular question according to the requirement part and the verb used in the requirement part.
When you have done yourself, when you have given more than 100%, then you can refer to the answer given by the ICI to compare your answer with the ICI answer. Then you can compare how much improvement you have to make while attempting the question. बट द प्रॉब्लम इज जो बच्चों को भी ये सब्जेक्ट टफ लगता है वो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, दे जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन वंस, गिव देम 1 or 2 minutes एंड देन रेफर टू द सजेस्टेड आंसर गिवन बाय द आईसीआई. आंसर के आधार पर वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. आई एम रिपीटिंग, बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन दे आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. दिस इज नॉट द वे टू डील विद दिस सब्जेक्ट. समझ गया बेटा? कितना भी टफ क्वेश्चन हो, it's not necessary that you should do 300-400 question in this particular subject. If you are having less time, then do less number of question, but always try on your own, because in the examination there will not be any suggested answer. So अगर आपने अपने माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं दिया है कि how I think on my own, तो बेटा कोई जादू नहीं है ना कि वो एग्जामिनेशन के 3 आवर्स में वर्क करने लग जाएगा जैसी आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करता है. मेनी स्टूडेंट पास इन दिस पेपर, मेनी स्कोर एग्जाम्शन, है ना. तो ये सब्जेक्ट अगर टफ होता तो बेटा सभी के लिए टफ होता, है ना. इफ almost majority of the students are passing this paper, are scoring good marks, even 70-82 marks they are scoring, then definitely somewhat strategy is needed to tackle this paper. And the strategy is, whenever you are attempting this paper on your own, first try on your own that particular question. When you are given 10-15 minutes to that particular question in the reading and the framework of the question, then only you should check the ICI answer and then compare. अच्छा ये वाला पॉइंट भी आता है, how this point arise in this question. सोचिए आप उसके बारे में, आईसीआई ने वो पॉइंट को कैसे लिंक किया. ये अगर एक बार आपने थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया ना, देन दिस सब्जेक्ट विल गिव यू मिनिमम 60 मार्क्स. आई चैलेंज बेटा, एक बार थॉट प्रोसेस आप डेवलप कर लीजिए सब्जेक्ट की, देन दिस सब्जेक्ट विल गिव यू मिनिमम 60 मार्क्स. ओके, कोई आपकी क्वेरी है तो पूछे बेटा. जो टीओसी का क्वेश्चन था, दैट हैज बीन आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स. Anything you want to ask, beta, in today's paper or the general query about this subject, you can ask. I'm waiting, beta. If you're having any query, you can ask. Otherwise, we can proceed towards the Six Sigma topic. And the students having attempt in November 2023 or May 2024, you can make short notes of this, what we have learned in a particular question. I'm repeating, this is a very useful technique you can adopt in each and every paper. Whenever you complete a question, ask yourself a question, what new I have learned from this question. Whether have a voice recording of that particular or write down in your own words in the copy. That will help you a lot if you are having that time, minimum 1 year of attempt. Okay, so ये टेक्निक आपको बहुत मदद करेगी कि इस क्वेश्चन से हमने क्या नया सीखा. Jyoti has asked, for what should be the revision strategy after completing study material and this ICI classes. One thing is sure, beta, no book has to be referred apart from the ICI notes. When I say ICI notes, it covers study material, RTP, MTP, case study digest, and number of questions ICI has provided to you. So there is no need at all to even refer any renowned author book also for having more number of questions. The number of questions which ICI has provided to you are more than enough.
What doesn't matter in this particular paper is the number of questions you have attempted before the examination. What matter is how many questions you have developed a thought process on your own to do this, है ना? तो जो आपका क्वेश्चन था बेटा रिवीजन स्ट्रेटेजी का, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब आप इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं सेशन के बाद, यहां से ही आप मार्किंग करना चालू कर दे। जब भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, देन मार्क which concept is important, highlight that concept, keywords, which question are important, that has to be done in the first revision. जब आप फर्स्ट रिविजन करेंगे तो उस समय आपको तैयारी करना है, whenever a chapter has been completed by you 15 to 20 minutes, that अब मुझे सेकेंड रिविजन में कौन कौन से क्वेश्चन करना है। इस प्रकार से आपके पास पहले ही क्लैरिटी रहेगी, इवन लास्ट डे बिफोर एग्जामिनेशन में हमें कौन कौन से क्वेश्चन का कौन कौन सा पॉइंट वी हैव टू रिवाइज ऑन आवर ओन। ओके, चलिए बेटा, नाउ बैक टू आवर बिजनेस, सिक्स सिग्मा। ओके, सो सिक्स सिग्मा इज अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक whose objective is to eliminate the defect in all area that affect customer satisfaction. Okay, now I have already told you beta, higher the perfection of the process, more is the sigma number. How the defects are identified? It has been identified as defect per million opportunity. Defect per million opportunity. Abbreviation is DPMO. आप ये बोलिए बेटा मेरे पास, whenever a case study question is there, you have to write this word and mnemonic DPMO, defect per million opportunity. 1 million is equal to 10 lakh. So ये हमें बताता है, ये रेशियो, ये स्टेट्स हमें बताता है कि how many defects are tolerated at what level. Just check, if you are having the 6 sigma, then the maximum number of defect is 3.4 out of 1 million opportunities. In other words, if you are producing 10 lakh units, then if you say that yes, we are 6 sigma compliance company, then the maximum defect that has been allowed in those 10 lakh production is just 3.4 defect. If you are 5 sigma compliance company, then the maximum defect can be 233 out of 1 million, that is 10 lakh units production. तो आप देखिए जैसे जैसे सिग्मा लेवल बढ़ता जाता है, इट मींस इट इज नियर टू परफेक्शन, तो वहां पे नंबर ऑफ डिफेक्ट आपके कम होते जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट इज डीपीएमओ इज डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डीपीएमओ, राइट डाउन इन योर कॉपी, डीपीएमओ, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। Defect per million opportunities. डैश करके लिखिए, at 6 sigma level, at 6 sigma level, the DPMO is, at 6 sigma level, the DPMO is 3.4. At 6 sigma level, the defect is, the DPMO is 3.4. Full stop. Next line. In other words, the maximum number of defect can be, the maximum number of defect can be 3.4. The maximum number of defect can be 3.4 out of a total production of, the maximum number of defect is 3.4 out of a total maximum production of 10 lakh units. Now, beta, whatever sigma level has been given in this particular question, you have to mug up this one, especially from 3rd sigma to 6 sigma. Why I'm telling you, you have to mug up this detail, that in 3 sigma,
the maximum number of defect is 66,807. In 4 Sigma, it's 6210, because whenever a case study question is there in this particular concept of Six Sigma, what they require from you, that you have to identify the current Sigma level of the organization. You have to identify the current Sigma level of the organization based on the number of defects. Suppose the organization is having 6,000 defects per million opportunities. So you have to recall that if the maximum defect is 6210, that is, in the current question, the defect is 6,000 per million opportunity, then the company is currently operating at 4 Sigma. Now you will derive a mechanism that the organization will reach from 4 Sigma to 6 Sigma, and then finally from 6 Sigma to 6 Sigma. It's a long process. It will take minimum 5 to 7 years to achieve from the current level of Sigma to the 6 Sigma level, because almost 0 defect at 6 Sigma level, 3.4 defect per million opportunities. Okay, so ये वाला point आपको ध्यान रखना है बेटा. Especially from 3rd Sigma to 6 Sigma, you have to just mug up the number, because it will be very handy while dealing with a case study on this particular concept, 6 Sigma. ठीक है बेटा. Now, अब जो study material में दिया है, now I am giving you time to have a reading of the content given in the study material regarding the Six Sigma. Then we will move further. What are the techniques through which Six Sigma technique will be implemented? So there are two techniques. The first one is known as DMAIC, and the second one is known as DMAIC. So please open kare beta page number 29. It's page number 29, 3.29. ये पूरा 3.29 आपको पढ़ना है यहां तक. पेज नंबर 3.30 तक, यहां तक आपको पूरा एक बार रीड आउट करना है. फिर इसके बाद अपन बढ़ेंगे व्हाट आर दी टेक्निक, व्हाट आर दी इंप्लीमेंटेशन टेक्निक ऑफ सिक्स सिग्मा, है ना. चलिए पेज नंबर 3.29 एंड फर्स्ट टू पैरा ऑफ पेज नंबर 3.30. आई एम गिविंग कंप्लीट 5 minutes to read out each and every content that has been given in the study material regarding the concept Six Sigma.
Last 1 minute, beta, to read out the content from the study material, and then we will proceed towards the implementation of Six Sigma. ओके बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन आगे. नाउ व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक ऑफ सिक्स सिग्मा? देयर आर टू इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक ऑफ सिक्स सिग्मा. द फर्स्ट वन इज नोन एज डीमैक टेक्निक. पहली जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है दैट इज नोन एज डीमैक टेक्निक. द सेकंड वन इज नोन एज DMAIC. So DMAIC consists of 5 words. Okay, define, measure, analyze, improve, and control. Well, DMAIC also consists of 5 words. The first 3 words and the meaning of those 3 words are common. Define, measure, and analyze are common in both the technique. Only the last 2 words are different in both the technique. So, which technique is to be applied when? There is one rule that if you want to apply Six Sigma technique for an existing product or existing process, then the technique you should use is DMAIC. DMAIC. Once again, I am repeating, beta. If you are implementing Six Sigma for the existing product or the existing process, the technique to be adopted is known as DMAIC. But if you want to implement Six Sigma for an altogether new process or a new product, then the technique that will be used is known as DMAIC. Clear है? तो लिखिए बेटा कॉपी में आप. Implementation of Six Sigma. Implementation of Six Sigma. Implementation of Six Sigma. The following are the 2 techniques. The following are the 2 techniques to implement Six Sigma. Next line. Technique number 1. Technique number 1. DMAIC. DMAIC. Technique number 1. DMAIC. DMAIC. डैश करके लिखिए. Use for existing product. Use for existing product oblique services. Used for existing product oblique services. Next line. Technique number 2. Technique number 2. DMAIC. DMAIC. सभी कैपिटल लेटर्स में होता है. DMAIC. 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 Used for new product. Used for new product oblique services. Okay, beta. So we will start the very first technique. A very limited discussion is available in the study material regarding the DMAIC. Whatever case study question has been drafted, that has been drafted on the very first technique known as DMAIC technique.
Okay, U for existing product oblique process to implement the Six Sigma concept for DMAIC. For D stand for define, M stand for measure, A stand for analyze, I for improvement, and C for control. First of all, you are using the Six Sigma technique for existing product oblique services. That's why you have implemented the technique DMAIC. So first of all, you should define the problem. What should be the define? There should be three define of the issues. The first issue that we will define is define the problem the customer is facing right now. Define the problem. Second, what is the project goal? आप जो आज का डिफेक्ट लेवल है उसको कहां तक आप उसको रिड्यूस करना चाहते हो द प्रोजेक्ट को. And third, what are the customer requirement? These three things are to be dealt with in the first word that is defined. Can you repeat with me, beta? What are the three things? First one, what are the issues? Second, what is the project goal? And third, what are the customer requirement? Because in the very first part, definition part, we have clearly seen that it is to eliminate defect in any aspect that affect customer satisfaction. So first point here. Second point is measure. M stands for measure. Whatever problem, whatever defect you are having right now, that has to be measured statistically. That has to be measured statistically. चलिए बेटा एक काम करते हैं, अपन इसको भी ड्रॉप करते हैं. I will give a simple example. Suppose I am having a fever. बुखार है मुझे, ठीक है. I go to the doctor. I consult him. सबसे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम उसके बाद शेयर करता हूं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है. Whenever I go for consultancy to a renowned doctor, मैं सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताता हूं, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बताता हूं कि भैया व्हाट आर माय रिक्वायरमेंट, है ना. ठीक है, मैं हॉस्पिटलाइज हो सकता हूं, नहीं हो सकता हूं, मुझे कैसी दवा चाहिए, स्ट्रॉन्ग, कुछ एलर्जी है नहीं है, वो मैं पूरा उसको डिफाइन कर देता हूं. सेकेंड, डॉक्टर विल नॉट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन राइट स्ट्रेट अवे. First, they will do some pathology test or the X-ray if required. Then only they will prescribe me the final medicine. So they require some statistical data. They require some data, pathology data, so that जो आपने उन्हें define किया है वो measure कर पाए how severe is your problem. Once the reports are ready, then again you consult that doctor, and now the doctor will analyze the root cause. This is very important. Now the doctor will analyze the root cause कि आपको मैंने ये अलग अलग पैथोलॉजी रिपोर्ट दिया था, उनको सबको सिंक्रोनाइज करता है. Then the doctor will identify the root cause and then provide you the medicine so that whatever problem you are facing, health problem, that can be rectified. And if the problem has not been rectified yet, or it has been rectified to a certain extent only, then you again do after few days, 10 days or 15 days to the doctor to consult once again. Okay, so that is the procedure that we follow in the DMAIC technique. The first one is define. Three things we will define. The first thing, what are the issues? What are the problematic areas? Second, what is the project goal? And third one is, what are the customer requirements? Second, whatever problem we are facing, we must convert that problem into statistical data. Suppose customer के return आ रहे हैं. The issue is due to quality issue, the customers are returning their goods. So यहाँ पे हम measure करेंगे how many goods are returned out of the total. Particular अगर हम इंडिया को 4 पार्ट में बाइफरकेट कर देते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो कौन से एरिया से प्रॉब्लम आ रही है, किस एज ग्रुप वाले कस्टमर से हमें ज्यादा कंप्लेन मिल रही है, all this we will measure. And once the statistical data is ready, now we will analyze. और analyze पे 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है. रूट कॉज एनालिसिस. सुपरफिशियल नहीं जाना है, हमें रूट कॉज में जाना है. What is the root cause behind this problem that has been defined in the defined phase? And then improvement में हम alternate solution develop करते हैं. Alternate solution, I have not used the word solution. Alternate solution हम इसमें derive करते हैं. And finally, the management
will implement the best among those alternate solution, और लास्ट में कंट्रोल जब तक अब हम 6 सिग्मा लेवल तक ना पहुंचते जाए, हमें वापस से ये एनालाइज रूट कॉज करते जाना है. सो डिफाइन, मेजर, analyze, improve and control. These are the 5 words in DMAIC technique that will be used for existing product oblique services. है ना, लिखिए बेटा अपनी कॉपी में. फर्स्ट टेक्निक नंबर 1, DMAIC. लिखिए बेटा. There are total 5 phases. There are total 5 phases in the DMAIC technique. There are total 5 phases in the DMAIC technique. लिखिए बेटा. Phase number 1, define. Phase number 1, define. इसमें लिखिए, we will define the following 3 things. We will define the following 3 things. One by one लिखिएगा बेटा. First point, define the problem. Define the problem. Second point, define the project goal. Define the problem. Second point, define the project goal. Third point, define the customer requirement. Drop one line and then write down phase number 2, measure. Phase number 2, measure. इसमें लिखिए बेटा, we will use some statistical technique. We will use some statistical technique to measure. We will use some statistical technique to measure the current performance. We will use some statistical technique to measure the current performance. Drop one line and then write down phase number 3, analyze. We will identify, write down in inverted comma, these 2 words are very, very important, root cause, R-O-O-T, root cause. We will identify the root cause, inverted comma close, for the poor performance. We will identify the root cause for the poor performance. Drop one line and then write down phase number 4. Phase number 4, improve. We will provide multiple solutions to eliminate the root cause comma, thereby improving the process. Thereby improving the process.
thereby improving the process. Next लिखिए बेटा last control. Phase number 5 control. It is the maintenance of the current process, improved process. It is the maintenance of the current improved process and also the future process. And also the future process. ठीक है बेटा, अब आप एक काम कीजिए, स्टडी मटेरियल से आप एक बार ये पढ़िए बेटा पूरा, देन वी विल हैव वन case study question on this particular concept. ओके, सो आप स्टडी मटेरियल से एक बार रीड आउट कीजिए जो डीमैक टेक्निक है, व्हाट दिस डीमैक टेक्निक इज ऑल अबाउट. ये आपको दिया हुआ है आई थिंक पेज नंबर 3.30 में डीमैक टेक्निक जो दिया हुआ है, along with DMAIC is used in the following circumstances. एक बार आप ये पढ़िए बेटा. And then in page number 3.31 one example has been given of a banking factor. ये आपको और further clarity provide करेगा कि what are the 5 phases and what are their true meaning. And especially ये वाला जो है page number 3.31 वाला, read it out very very carefully beta. It will provide you more understanding, in-depth knowledge about the concept DMAIC technique. Okay, so I'm giving you complete 5 to 7 minutes to read out, 5 minutes to read out the application of DMAIC in the form of a banking factor, and 2 minutes maximum for the content given in page number 5.30. Because all of the content we have already covered, written down in our copy. What new if for you is the content given in page number 5.31. A practical example has been given related to a banking which wants to apply the DMAIC technique to improve its performance near about to perfection, that is Six Sigma. Okay beta, so 5 to 7 minutes I am providing to you, and 5 minutes specially for this page number 3.31 example related to a bank.
Okay, beta. Hope you read out the content of specially page number 6.31. It's a beautiful example given for a banking sector. What are the problem they are facing? है ना? चलिए, बढ़े आगे बेटा. Now one assignment I am giving to you, that in the same page, in page number 6.31, there is a case scenario known as Derby grade. So it's a case scenario on Six Sigma. You can comfortably solve now this case scenario based on the DMAIC technique. Clear, beta? Chale. Now let's take a break of 15 minutes and then we will move towards the last topic. जो chapter का heading था lean system and innovation. So lean system we have almost completed. Now we will move to the next part of this particular chapter, last part of this particular chapter, innovation. In innovation, there are two topics. The first topic is process innovation, which hardly take 2 or 3 minutes. The main focus will be on the BPR, business process re-engineering. Also, a case study is there related to that particular concept of BPR. Definitely, we will discuss that in the class itself. Okay, so let's take a break of 15 minutes and then we will move towards the last major topic of this particular chapter, that is the BPR, business process re-engineering. Okay, so let's take a break till 1947. The break will be at 1947. And then we will move towards the last important topic. Okay, beta, so be on time. We will start the business process re-engineering known as BPR.
चलिए बेटा, so let's go with the last major topic of this particular chapter, business process re-engineering, commonly known as BPR. Okay, चलिए, give the heading in your copy beta, business process re-engineering, and write down in bracket the abbreviated name BPR. Business process re-engineering, the abbreviated name is BPR. We have already understood a technique known as Kaizen costing. Okay. Now just recall the concept of Kaizen costing, whether the improvement in Kaizen costing will be small or drastically big. Whether the improvement achieved by Kaizen costing is small or big one. Definitely, Kaizen costing focus on small incremental changes that will over a period of time, long period of time, will bring significant improvement. So वो भी हमारा improvement technique था, Kaizen costing, but Kaizen costing believes in a small incremental step. I also given you an example of a car manufacturer that suppose the current cost of manufacturing a car is 5 lakh. By applying the Kaizen costing, the result might be that the car cost will now be 4,99,800 something after 1 or 2 months efforts. And then again we will apply the Kaizen costing because it will be applied over a long period of time. Then again the cost reduction will be 150 to 200. So this small incremental cost reduction over a long period of time is the concept of Kaizen costing. BPR, business process reengineering, is just the opposite of Kaizen costing. If any improvement to be called as BPR, it must be in the minimum range of 15 to 20%. अगर हम कोई भी इंप्रूवमेंट को बीपीआर बोलते हैं, बीपीआर का उसमें टैग लगाते हैं, फील लगाते हैं, then that improvement should be minimum in the range of 15 to 20%, then only such improvement can be known as business process re-engineering. But one major difference between Kaizen costing and the BPR, apart from the improvement, is Kaizen costing will be applied over a long period of time, while BPR will not be applied over a long period of time. It will be applied after a long interval. It means आपने BPR को आज एक प्रोसेस के लगाया, then the next time you will apply might be 2 years, 3 years or 5 years after. लेकिन यहां पे जो इंप्रूवमेंट होता है वो एकदम ड्रास्टिक होता है, minimum to the tune of 15 to 20%. Basically, the originator of BPR is Ford Motor Company. कार सेगमेंट में आपने सुना होगा बेटा, फोर्ड कंपनी. तो फोर्ड मोटर कंपनी ने इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया था, एंड दे हैव अचीव्ड अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ 75%. But such a big improvement is not expected nowadays. Even if you are achieving minimum 15 to 20% improvement, that can be called as BPR, business process re-engineering. So दो चीज तो हमारे मन में क्लियर हो गई है काइजन कॉस्टिंग से कंपैरिजन करके. यहां पे जो भी कुछ होने वाला है वो बड़ा होने वाला है ना, जबकि काइजन कॉस्टिंग छोटे छोटे स्टेप लेके चलता था. सेकेंड पॉइंट, काइजन कॉस्टिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वर्क करता था, जबकि ये ओवर अ लॉन्ग इंटरवल वर्क करेगा. देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, इससे आपको क्लियर होगा अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बीपीआर. ये देखिए, ये जो आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है ना यहां से यहां तक, दिस इज नॉट द इंप्रूवमेंट ऑफ बीपीआर. ये जो इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट द इंप्रूवमेंट ऑफ बीपीआर. ये जो इंप्रूवमेंट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ काइजन कॉस्टिंग. और यहां से यहां तक पहुंचने में दे हैव टुक almost 5 years, 10 years or 15 years, because Kaizen costing focus on a small incremental step. जबकि जिस समय आप BPR लगाते हैं, within a few months effort आपका improvement minimum 15 to 20% बढ़ जाता है. एंड फोर्ड मोटर कंपनी जिन्होंने सिस्टम इंप्लीमेंट किया था फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, उनका इंप्रूवमेंट ड्रामेटिक था 75% का. फिर देखिए, फिर यहां पे अब आपको कभी अगर बीपीआर लगेगा तो वो इस एरिया में लगेगा,
जब आपका काइजन कॉस्टिंग की ग्रोथ लगभग स्टेबल हो जाती है, देन अगेन यू रिक्वायर अ वेरी स्ट्रेंज पुशअप, तो उसके लिए फिर यहां पे अगेन आप बीपीआर लगाएंगे, फिर आपका काइजन कॉस्टिंग स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट करते दिखता जाएगा. So I think this diagram makes you clear about the difference between Kaizen costing and the BPR, business process re-engineering. Okay बेटा, चलिए. तो देखिए ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट हैज बीन गिवन बाय माइकल हेमर. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, एंड द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज री इंजीनियरिंग वर्क, डोंट ऑटोमेट, ऑब्लिटरेट. है ना? लिखिए बेटा, पहला पॉइंट लिखिए आप इसमें. कंपैरिजन ऑफ Kaizen costing and BPR. Comparison of Kaizen costing and BPR. लिखिए बेटा इसमें आप. फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, बोथ द टेक्निक फोकस ऑन इंप्रूवमेंट. बोथ द टेक्निक फोकस ऑन इंप्रूवमेंट. But their approach are quite different. But their approach are quite different. इसी में सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा, पॉइंट वही है ना, कंपैरिजन ऑफ काइजन कॉस्टिंग एंड बीपीआर. इसी में सेकंड पॉइंट, काइजन कॉस्टिंग फोकस ऑन स्मॉल इंप्रूवमेंट. Kaizen costing focus on small improvement, while BPR focus on dramatic improvement. While BPR focus on dramatic improvement. नेक्स्ट लाइन में लिखे, अनदर डिफरेंशिएशन इज, Kaizen costing is applied over a long period of time. Kaizen costing is applied over a long period of time, while BPR will be applied over a long interval. अब मेन सेकंड पॉइंट लिखे बेटा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ काइजन एंड बीपीआर. अब मेन सेकंड पॉइंट लिखे, ओरिजिन. The concept has been given by Michael Hammer. स्पेलिंग आपके स्क्रीन में है बेटा. The concept has been given by Michael Hammer. Comma, an article published in Harvard Business Review. An article published in Harvard Business Review. सब आपको मगअप करना पड़ता है बेटा, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ये कंटेंट अगर वहां पे देते हैं ना, that will create a long lasting impression on the mind of the paper checker. An article published in Harvard Business Review, comma, titled, ये पूरा अब आप कॉपी करें स्क्रीन से,
re-engineering work don't automate, obliterate. Re-engineering work don't automate, obliterate. अब इसका मतलब क्या है बेटा, है ना? इन्होंने टाइटल दिया था री इंजीनियरिंग वर्क डोंट ऑटोमेट, ऑब्लिटरेट। सो इस टाइटल की हेडिंग से लगता है कि इन्होंने ऑटोमेशन के लिए मना किया है। नो, ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड इन बीपीआर अनडाउटेडली। अगर आपको बीपीआर इंप्लीमेंट करना है तो आपको ऑटोमेशन करना पड़ेगा। What the author doesn't want, Michael Hammer doesn't want that simply automation cannot be termed as BPR. Once again, beta, once again. While implementing BPR, automation is needed, no doubt about it. वो लगेगा ही लगेगा, automation करना ही पड़ेगा. But if you are simply automating your system, your process, without any thought process, then it cannot be termed as a BPR. Otherwise, what people will do, right now they are doing manual billing. Suppose sales invoice जो बना रहे हो manual बना रहे हो. Now, by automation of the billing process, और वो computerized billing बनती है तो उसको आप BPR बोल देंगे. No, simply automation doesn't mean BPR. Automation required है BPR में, but after a thorough thought process. मतलब right from scratch जब आप प्लान करते हैं और पूरी प्रोसेस में आप ऑटोमेशन भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, then the complete package is known as BPR. Re-engineer work. It means if that process or product has been manufactured, has been performed for the very first time, how it will operate. You have to think from scratch and then do automation in that process, then it is called as business process re-engineering. Okay, beta. So simply automation doesn't mean it is BPR, process designed right from scratch, and then in that process we introduce automation. Together the complete package is known as BPR, business process re-engineering. Clear beta? चलिए, तो लिखिए बेटा, पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं, फिर इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 4, 5, 6 कीवर्ड्स है, उस पर हम पूरा फोकस करेंगे. लिखिए मीनिंग. थर्ड पॉइंट लिखिए मीनिंग. मीनिंग ऑफ बीपीआर. मीनिंग ऑफ बीपीआर. द फंडामेंटल रीथिंकिंग. मीनिंग ऑफ बीपीआर में लिखिए द फंडामेंटल रीथिंकिंग and radical redesign of business process to achieve dramatic improvement in almost all of the areas. To achieve dramatic improvement in all of the areas. देखिए अब यहां पे कुछ कीवर्ड्स है बेटा, प्लीज 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 focus on this keyword. The first keyword combination of keywords is fundamental rethinking. Second is radical redesign. Third is dramatic improvement. सबसे पहले आप इस वर्ड पे गौर कीजिए बेटा, फंडामेंटल थिंकिंग नहीं है, फंडामेंटल रेडिकल डिजाइन, रेडिकल रीडिजाइन है. What does this indicate? Can you tell me beta? Can any student tell me? The word fundamental thinking are not there. The words radical design are not there. Intentionally, the word rethinking, intentionally the word redesign has been used.
why the word RE has been used in this definition of BPR. Can anyone able to tell me the interpretation part, why this word alphabet RE has been used with the thinking word to make it rethinking and with the redesigned word? Okay, I'm waiting for your interpretation, beta. Please communicate. What's the purpose of using the word fundamental rethinking, RE, rethinking, and radical redefine? I'm waiting for your answers, beta. Please communicate to me. Okay, Jyoti. Okay, beta. Aniket, yes, your answer is 100% correct. The word re-indicate means that BPR will not be applied to any new product or new process. BPR will be applied to existing process or product, and especially process, business process. It's not BPR will be applied to new process, while Six Sigma can be applied to altogether new process by a technique known as DMAIC. But BPR will be applied only and only to the existing business process. Okay, beta? That's why the word has been used. So the first combination word is fundamental rethinking. What do you mean by fundamental rethinking? Second keywords are radical redesign. Radical redesign. So let's continue the interpretation of fundamental rethinking. फंडामेंटल रीथिंकिंग मीन्स मान के चलिए आज हमारी एक प्रोसेस है सेल्स इनवॉइस प्रोसेस। ओके, उसमें एक पर्टिकुलर हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस। डोंट ट्राई टू इंप्रूव द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोफार्मा इनवॉइस। दिस बीपीआर रिक्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, why we are performing this particular business process। इंप्रूवमेंट तो बेटा बहुत दूर की बात है। सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन पूछिए आप, ये बिजनेस प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं। It might be possible that it has been implemented way back 10 years before, but now the situation has changed, so this process is not needed at all. So don't just try to improve the process. First of all, fundamental rethinking, right from the scratch, ask yourself why we are performing this particular process. And if the answer is this is necessary now, even now to perform this process, then ask yourself why we are doing the same way as we are doing 10 years before. समझ के बेटा, दो फंडामेंटल क्वेश्चन आपको पूछना है। पहला फंडामेंटल क्वेश्चन सीधा उसके सर्वाइवल पे आप अटैक कर रहे हो, व्हाई वी आर डूइंग दिस बिजनेस प्रोसेस। हो गया? इफ द आंसर इज यस, नो, इट्स नीडेड इवन नाउ, देन आस्क योरसेल्फ व्हाई वी आर डूइंग द सेम वे एज वी आर डूइंग सिंस लास्ट 10 ईयर, व्हाई देयर कैन नॉट बी एनी अल्टरनेटिव वे। कौन में बेटा? रीथिंकिंग नहीं, फंडामेंटल। द वर्ड फंडामेंटल इंडिकेट कि आप उसके सर्वाइवल पे पहले अटैक करते हो और क्वेश्चन पूछते हो क्या आज ये बिजनेस प्रोसेस नेसेसरी है, और अगर है तो इसको उसी तरीके से हम क्यों कर रहे हैं जैसा हम पहले करते आए थे। ठीक है? द नेक्स्ट कीवर्ड आर रेडिकल रीडिफाइन। इट्स नॉट रीडिफाइन, द वर्ड इंपॉर्टेंट इज एडजेक्टिव जो यहां पे दिया है वो रेडिकल दिया है। इट इंडिकेट इफ दिस इज द प्रोसेस, इफ वी इंप्लीमेंट दिस प्रोसेस द वेरी फर्स्ट टाइम, हालांकि वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन रेडिकल वर्ड का मतलब क्या है? अगर ये प्रोसेस हम पहली बार इंप्लीमेंट करते, सो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, व्हाट विल बी द फंक्शंस दैट विल बी इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, दैट इज समव्हाट
we know as radical redesign. So रीथिंकिंग नहीं है, फंडामेंटल रीथिंकिंग है. रीडिजाइन नहीं है, रेडिकल रीडिजाइन है. समझ में आया क्वेश्चन? फंडामेंटल के लिए क्वेश्चन, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस. इफ द आंसर इज यस, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग इन द सेम वे एज वी हैव डन इन द पास्ट. दिस इज नोन एज फंडामेंटल रीथिंकिंग. Redesign नहीं है, radical redesign. It means if this process is to be implemented for the first time in the organization, what function we will incorporate, how this process will be executed, right from the scratch you will plan it. Third keywords important are dramatic improvement. These are not the improvement. We require dramatic improvement, and any improvement to the tune of minimum 15 to 20% improvement will be considered as dramatic improvement in all the critical contemporary area of performance such as cost, quality, service, and speed. You can apply this BPR in any area, either to achieve dramatic improvement in cost, dramatic improvement in quality, service, or speed of the organization. Clear beta? है ना? चलिए, तो देखिए अब आप स्टडी मटेरियल निकालिए. स्टडी मटेरियल में यही पूरा कंटेंट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. ओके बेटा, आई एम इन पेज नंबर 3.37. देखिए ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं. प्लीज प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट वेन एवर यू आर गिवन टाइम टू रीड आउट ऑन योर ओन दिस पॉइंट. अगर हम ये ब्रांड न्यू कंपनी होते तो हम इसको कैसे ऑपरेट करते. मिनिमम 15, जो मैंने आपको बताया, मिनिमम 75% इन्होंने इंप्रूवमेंट किया था फोर्ड मोटर कंपनी ने. तो ये एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस कहीं भी हम कर सकते हैं. तो यहां तक बेटा आप पूरा रीड आउट कीजिए, है ना? यहां तक पूरा पेज नंबर 3.37 और 3.38 का मिनिमम आई एम गिविंग यू 7 मिनट, बिकॉज जितने अच्छे से आप ये पढ़ेंगे ना बेटा, देन उतना कॉन्फिडेंटली आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो जस्ट अपन इसके बाद चालू करेंगे. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन रीडिंग ऑफ कंटेंट गिवन इन पेज नंबर 3.37 एंड 3.38 जो मैंने मार्किंग किया हूं यहां तक. देन वी विल मूव टुवर्ड्स अ सुपर केस स्टडी बेस्ड ऑन बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस reengineering. ठीक है बेटा? तो आई एम गिविंग यू 5 to 7 minutes to have a strong interpretation reading of the content of page number 37 and 38. Okay, chलिए. Please utilize each and every minute beta of whatever time you have been allotted to read out on your own. That's a very very important part of to develop your thought process. Okay, don't take it lightly. It's a science that how this subject can be handled by a student. Definitely if the thought process is developed, they will not face any issue. So whenever I'm giving you the time, it's the part and parcel of training to develop the thought process of the students. Okay.
2 minutes are more available with you. Try to interpret each and every line of the content so that we can start a question on BPR. Okay, beta. So let's continue. So any doubt in the content of BPR given in the study material, you can ask me, beta. Before starting that question, I'm having some MCQs on today's session. First, complete those MCQ, and then we will move towards the last case study of this particular chapter, chapter number 3, Lean System and Innovation. तो आइए बेटा, सबसे पहले कुछ MCQs है. Let's try those MCQs, and then we will move further towards the case study session. So ये है बेटा आपके सामने MCQ. जल्दी से आप मुझे बताइए, what is the correct answer? 1, 2, 3 और 4. DMAIC technique is used for project aimed at. Which of the option is correct? A very simple MCQ, undoubtedly. Which of the option is correct? Please reply fast, Pida. I'm waiting for your answer. Okay, so the correct answer is undoubtedly option number 1. It is used to improve an existing business process. Second option will be correct when the technique is not DMAIC, it is DMAIC. Okay, so correct. Congratulations, बेटा. ये बहुत बहुत अच्छा MCQ है बेटा. Take your time and then answer me. What is the correct answer of this particular MCQ? Take your time, beta. This is a superb one, okay? Okay, according to Jyoti, it's option number 3rd. Okay, what about other student? Rashmi, Bhaumik, Apala, Sudhir. What is the correct answer? So the correct answer is option number 3rd, both A and B. Undoubtedly, Six Sigma being a component of lean system, focus on cost reduction without sacrificing the quality of the product. But we have already seen the definition of Six Sigma. It's a quality improvement technique so as to eliminate defect. अब जब defect eliminate होंगे तो definitely हमारी cost reduce होगी, waste reduce होगा, because one of the 7 type of waste is defect. तो defect जब eliminate होंगे तो automatically our cost will reduce, but since it focus on customer satisfaction, thereby improving the quality of the product. So the correct answer is both A and B. Six Sigma not only reduces the waste, that is non-value added cost, but also improves the quality of the product. तो बहुत अच्छा MCQ था बेटा ये वाला. ये एक सिंपल MCQ है. बताइए इसका आंसर क्या होगा? लास्ट MCQ.
समझ में आया बेटा वो पुराना वाला एमसीक्यू? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैव आंसर्ड इट्स ऑप्शन नंबर 2, but it's option number A and B, that is option number 3 is the correct one. And now tell me what is the correct answer for this last MCQ? Okay, Rashmi, Jyoti, Bhaumik, Sudhir has answered it's option number 2. Yes, beta, it's a simple one. DPMO stands for defect per million opportunities. Can you tell me, if I manufacture 10 lakh units, how many units can be considered defective in Six Sigma level? What is the threshold? What is DPMO in case of Six Sigma? It's 3.4 defect per million opportunities. क्लियर है बेटा? चलिए अब आते हैं अपन केस स्टडीज में. एक बहुत अच्छा केस स्टडी है इसके ऊपर आपका बीपीआर के ऊपर. लेट्स जंप टू दैट केस स्टडी. Please open page number 47. Page number 47. ओके, सबसे पहले अपन रिक्वायरमेंट पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे बेटा. ओके, सो 3 रिक्वायरमेंट पार्ट है. हम सिर्फ सिंगल रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन. Advise an information system which would be required for the re-engineering. Advise an information system which would be required for the re-engineering. तो इससे आपको पता लग जाता है बेटा, री इंजीनियरिंग बोल रहा है. आपके पूरे सिलेबस में री इंजीनियरिंग अगर कहीं वर्ड यूज हुआ है एंड दैट वर्ड इज एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. ओके, चलिए तो एक बार आप पूरा एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगाते हैं अपन एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन रीडिंग. लेकिन पहले न्यूज़पेपर रीडिंग. ओके, चलिए देखिए. हमें कंपनी की हिस्ट्री दे रहा है. ANA is one of country I top footwear companies and other equipment. This is the newspaper reading, beta. Na? Have understanding of 5 to 10% in this newspaper reading of 4 to 5 minutes. Since its foundation in 1988, company has been one of the all-inclusive footwear brand that is committed to nurturing the youth across the world through sports to contribute to society. एक काम करें ना बेटा, ये न्यूज़पेपर रीडिंग आप लगाए. इफ आई डू ना देन ये बोरियत क्रिएट होगी फिर, है ना. इट विल बी अ बोर्डम स्टेट. तो न्यूज़पेपर रीडिंग आप लगाए, 4 मिनट्स आर अवेलेबल विथ यू. देन कंबाइंडली we will do the interpretation reading, and that's the most important part to answer the requirement part. Okay, तो newspaper reading एक बार आप जल्दी से पूरा क्वेश्चन पढ़िए. Expect 5 to 10% understanding of the question, and then in the second interpretation reading you will have a complete knowledge of each and everything given in that particular question. चलिए, तो 4 to 5 minutes आपके पास. Have a newspaper reading of this particular question number 7.
चलिए बेटा, पढ़ लिया आपने, तो अब चालू करते हैं अपन इंटरप्रिटेशन रीडिंग, है ना। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली बेटा। सबसे पहले कंपनी का नाम ANA है। माय कंपनी इज एंगेज इन फुटवेयर बिजनेस। ओके। पिछले 3 डेकेड से हमारी कंपनी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्क कर रही है। सभी काइंड्स ऑफ फुटवेयर हम मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी इज बेस्ट नोन फॉर its high ethical standard towards its worker, supplier, environment, and voluntary publish CSR report every year. So first para में क्या क्या important है? The name of the company is ANA. It's in the business of footwear. All kind of footwears are being manufactured by the company over the last 3 decades. Company is best known for its high ethical standard towards worker, supplier, environment, और वॉलंटरी वो CSR भी पब्लिक करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और जो हमारी इंडस्ट्री का मार्केट वो कैसा है, दो चीज अलग अलग है बेटा ना। प्लीज रेफर द हेडिंग वंस अगेन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो हमारी कंपनी है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो कैसे वर्क करते हैं, एंड व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री, फुटवेयर मार्केट मींस इंडस्ट्री। सो अब ये हमारी कंपनी के बारे में बता रहा है। आवर कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कन्वेंशनल फंक्शनल डिपार्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल डिपार्टमेंट? सेल्स का फंक्शन एक अलग टीम है, परचेज इज हैविंग अ सेपरेट टीम, फाइनेंस इज हैविंग अ सेपरेट टीम। फंक्शनल डिपार्टमेंट मतलब हर एक फंक्शन के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट सेट कर दिया है। सो राइट नाउ आवर कंपनी इज हैविंग कन्वेंशनल functional departments such as procurement, order taking, sale, finance, all are different department working on their respective function. यहां पे important, they have non-reliable Excel sheet data system for planning and reporting. Excel यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट बैड। तो एक वर्ड उन्होंने दिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, दे हैव यूज्ड द वर्ड नॉन रिलायबल एक्सेल शीट बेस्ड सिस्टम फॉर प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग। जब वो नॉन रिलायबल है तो डेफिनेटली उस डेटा का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसके कारण वी फेल्स टू जनरेट एक्यूरेट रिपोर्ट, टाइमली रिपोर्ट एंड कंसिस्टेंट रिपोर्ट टू मॉनिटर अवर ओन परफॉर्मेंस, जिसके कारण हम हमारा परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पा रहे हैं और जो रिटेल कस्टमर का डिलीवरी टारगेट है हम उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वी आर डिवाइडेड इनटू कन्वेंशनल फंक्शनल डिपार्टमेंट such as purchase, sale, order taking, finance, etc. And most importantly, we are using Excel sheet data system which are non-reliable. हम खुद मानते हैं वो रिलाय नहीं कर सकते, जिसके कारण हम एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं दे पाते, टाइमली रिपोर्ट नहीं दे पाते, कंसिस्टेंटली इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते, ड्यू टू विच वी आर अनेबल टू अचीव अवर परफॉर्मेंस, जो भी हमारा टारगेट परफॉर्मेंस था, एंड वी फेल्स टू डिलीवर टू अवर रिटेल कस्टमर ऑन अ टाइमली मैनर। ठीक है, नाउ अब ये हमारे को इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है कि इंडस्ट्री जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसके बारे में अब इंफॉर्मेशन दे रहा है। Footwear market is competitive and seasonal. Retailer who are companies customer for footwear, they have two main demand. Customer की दो डिमांड है। पहली डिमांड, they want footwear at lower prices. Definitely every customer wants the product at low prices but without compromising on quality. Second, they want to meet the performance and delivery target leading to lead time. Lead time मतलब टाइम बिटवीन टेकिंग ऑफ ऑर्डर एंड द डिलीवरी ऑफ ऑर्डर, वो मिनिमम होना चाहिए और क्वालिटी भी आपका टारगेट अचीव करना चाहिए। सो बेसिकली कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग थ्री थिंग। फर्स्ट, दे आर एक्सपेक्टिंग द लो प्राइस, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट डिलीवरी टारगेट टाइम शुड बी रिड्यूस्ड और मेट, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ये तीन रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की, हमारे पूरे इंडस्ट्री से। ओके, चलिए, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिटेलर डिमांड, अब हमारे कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया? कॉम्पिटिटर डिसकंटिन्यूड ऑल देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी and outsourced all the production to supplier
उन बड़े सप्लायर को जिनके पास ह्यूज कैपेसिटी है फॉर बल्क प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने नहीं किया है, हमारे कॉम्पिटिटर ने कस्टमर को टाइमली सप्लाई करने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए, लो कॉस्ट पे सप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे हैव डिसकंटिन्यूड ऑल देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और आउटसोर्स कर दिया उन सप्लायर को जिनके पास लार्ज प्रोडक्शन लाइन अवेलेबल है। शिपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया है एडवांस प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर टू कंसोलिडेट ऑर्डर, ताकि जो शिपिंग कंटेनर होता है उस पर पूरा लोड आ जाए, तो जिसके कारण हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है हम उसको रिड्यूस कर पाए। इवन दे हैव परचेज इनवॉइस प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड वाया द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द सप्लायर। एक बार वापस से बेटा ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, हम डिवाइडेड है फंक्शनल डिपार्टमेंट में, जो आपस में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो एक्सेल डेटा शीट के द्वारा होता है जो नॉन रिलायबल है, ड्यू टू विच वी आर नॉट एबल टू जनरेट रिपोर्ट एक्यूरेटली ऑन टाइमली बेसिस एंड ऑन कंसिस्टेंटली बेसिस, जिसके कारण हम अपना परफॉर्मेंस और डिलीवरी टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। What customers are expecting from the industry, they want the product at low prices, they want the delivery schedule to be met at any cost, and they want the quality product. तो इसके लिए हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या किया, they have discontinued their manufacturing facility and outsourced to the supplier who has large production line. ये पहला काम हमारे कॉम्पिटिटर ने किया। सेकेंड वर्क हमारे कॉम्पिटिटर ने किया, शिपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एडवांस प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट किया। तीसरा उन्होंने अपनी परचेज को फुल्ली ऑटोमेटेड कर लिया वाया इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द सप्लायर। क्लियर बेटा? अब हमारे पास प्रपोजल है आउटसोर्सिंग का, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर ने आउटसोर्स कर दिया है, तो नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग द प्रपोजल ऑफ आउटसोर्सिंग। इन ऑर्डर टू मिटिगेट कॉस्ट, it has been proposed to outsource the manufacture of footwear to a Chinese supplier 3750 किलोमीटर अवे। तो हमारे पास भी एक ऑप्शन है कि एक चाइनीज सप्लायर है, हम उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। इफ वी मैन्युफैक्चर इट विल कॉस्ट अस 625 BND, BND इज द होम करेंसी, व्हाइल इफ वी आउटसोर्स देन 28 चाइनीज युआन की हमें कॉस्ट आएगी। अब यहां पे आपको कन्वर्शन कॉस्ट दे रहा है, 1 चाइनीज युआन इज इक्वल टू 18 BND। इसके अलावा हमें शिपिंग कॉस्ट लगेगी जो BND 40,000 है, जिसमें 5,000 पेयर हम शिपमेंट करा सकते हैं फ्रॉम चाइना टू दिस कंट्री आई। इसके अलावा हमें 10% कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, प्लस 1% सोशल वेलफेयर लगेगा, जो आ सकता है, अभी नहीं है, लेकिन कस्टम टैरिफ आर एक्सपेक्टेड टू चेंज सून। तो हमारे पास प्रपोजल है कि हम भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करके हम चाइनीज सप्लायर को आउटसोर्स कर दे, जिसमें हमें उसको 28 युआन देना है, शिपिंग कॉस्ट हमारी लगेगी, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हमें कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा। राइट नाउ देयर इज नो कस्टम ड्यूटी, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट कस्टम ड्यूटी विल बी इम्पोज्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। ठीक है, अब इस प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रीस्ट्रक्चर आवर फंक्शनल डिपार्टमेंट इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। ये सबसे पहला हमें चेंज करना पड़ेगा टू कन्वर्ट द फंक्शनल डिपार्टमेंट इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। अभी क्या होता था, द फंक्शनल डिपार्टमेंट हु इज एंगेज इन ऑर्डर प्रोसेसिंग, वो सिर्फ ऑर्डर ही प्रोसेस करता था, परचेजिंग वाला सिर्फ परचेज करता था, सेल्स वाला सिर्फ सेल करता। नाउ इफ वी वांट टू इंप्लीमेंट दिस प्रपोजल, वी विल कन्वर्ट आवर फंक्शनल डिपार्टमेंट इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। मतलब एक टीम में ना सिर्फ सेल का बंदा रहेगा, परचेज का भी रहेगा, डिस्पैच का भी रहेगा, सो दैट कोऑर्डिनेशन कैन बी डन। अदर टीम में वापस से बंदे रहेंगे, लेकिन वो बंदे दूसरे होंगे। फिर हम अलग अलग टीम बनाएंगे जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाएगी। हर टीम एंड से लेकर ऑर्डर टेकिंग से लेकर डिस्पैच तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। नाउ फंक्शनल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली अ सिंगल फैक्टर। व्हेन वी कन्वर्ट दो फंक्शनल डिपार्टमेंट इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, तो वो राइट फ्रॉम ऑर्डर टेकिंग टिल डिस्पैच के लिए वो टीम से रिस्पॉन्सिबल होगी। ओके, ईच टीम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज सच एज बायर अकाउंट मैनेजमेंट, ऑर्डर टेकिंग से लेकर आफ्टर सेल सर्विस तक अब उसी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ओके,
कुछ मेंबर्स कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क करेंगे, जबकि कुछ मेंबर क्वालिटी ऑडिट और सप्लायर के ऑडिट के लिए चाइनीज सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। उनको हम ज्यादा लिबर्टी देंगे ताकि वो अपनी सेल प्राइस मार्केट कंडीशन के आधार पे वर्क कर पाए, और दूसरे स्टाफ को हम सपोर्ट स्टाफ के रूप में कोई दूसरा वर्क अलोकेट कर देंगे। सो ये प्रपोजल है हमारे पास। अगर हम प्रपोजल इंप्लीमेंट करते हैं तो ये सब चीजें हमें करना पड़ेगा। सो क्या क्या हुआ बेटा? फर्स्ट पैरा में हमें कंपनी का नाम बताया, फुटवेयर बिजनेस में है, लास्ट 3 डेकेड से हम वर्क कर रहे हैं, और हमारा हाई एथिकल स्टैंडर्ड है टुवर्ड्स वर्कर, सप्लायर एंड एनवायरमेंट। फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि हम फंक्शनली डिवाइडेड है, नॉन रिलायबल एक्सेल शीट डेटा है। फिर कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है पूरी इंडस्ट्री से वो बताया। देन कॉम्पिटिटर ने 3 स्टेप लिया है, दे हैव डिसकंटिन्यूड मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव इन्वेस्टेड इन एडवांस प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर, दे हैव इन्वेस्टेड इन ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ परचेज। हमारे पास भी प्रपोजल है, हम एक चाइनीज सप्लायर से परचेज कर सकते हैं, वो इज अप्रोक्सीमेटली 375 किलोमीटर अवे। कन्वर्शन रेट दिया है, शिपिंग कॉस्ट हमें दिया हुआ है, इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी इंपोज हो सकती है उसके बारे में दिया है। एंड दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम करते हैं तो हमें फंक्शनल डिपार्टमेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ स्टाफ हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में रहेंगे, सम स्टाफ विल बी एंगेज इन द क्वालिटी ऑडिट एट चाइनीज सप्लायर साइट, और जो कुछ है उनको हम अदर रोल प्ले करेंगे। नाउ एक्सपर्ट एडवाइस, एक प्रोफेसर डब्ल्यू.डी है, उन्होंने एडवाइस किया है कि कंपनी का जो प्रपोजल है have the feature of re-engineering process and can be defined as BPR. So in this question, there is no issue regarding the identification of the concept. It is clearly given. ये जो एक्सपर्ट है इन्होंने हमें बोला है कंपनी should consider software development for full front and order entry, purchasing, inventory management solution, which may be required along with ethical aspect of the proposed changes. तो इन्होंने बोला है ये जो भी आप प्रपोजल ला रहे हैं, it has all the characteristics of BPR, लेकिन इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए फॉर राइट फ्रॉम फ्रंट ऑर्डर एंट्री, फॉर परचेजिंग, फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉल्यूशन। क्योंकि बीपीआर में बोला गया था कि जब भी आप चेंज लाएंगे, लाइए राइट फ्रॉम द स्क्रैच आप चेंज करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर ऑटोमेशन कर देंगे देन इट विल बी अ बूम, है ना। सिर्फ ऑटोमेशन कर देने से बीपीआर नहीं हो जाता, लेकिन वो ऑटोमेशन बूम आपको क्रिएट करेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये वाला कि पहला जो पॉइंट है इसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। Just you to identify that answer. Advice on information system that would be required for the re-engineering. पूरा आंसर इसका क्वेश्चन में दिया है, just you to identify the same. Can you please identify that para to me बेटा, कि ये जो पहला रिक्वायरमेंट पार्ट है इसका आंसर कौन से पैरा में छुपा हुआ है इस पूरे क्वेश्चन में। आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू 2 minutes to identify that para. Please revert to me beta, I am waiting for your answers. आपको एडवाइस करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो आपको री इंजीनियरिंग प्रोसेस में लगेगा, एंड दैट आंसर हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। यस ज्योति, वेरी गुड बेटा, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। जो लास्ट पैरा ये है ना बेटा आपका, इस पैरा में आपको दिया है कि यू रिक्वायर व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यू रिक्वायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट राइट फ्रॉम फ्रंट एंड ऑर्डर एंट्री, परचेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ये आप बता सकते हो। फिर सेकंड आप ये बता सकते हो कि हमें एडवांस प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा, हमें अपने परचेज इनवॉइस ऑटोमेटेड करना पड़ेगा हमारे सप्लायर के साथ, so that real time information उनके पास पहुंचे।
So complete information has been given in the question itself. Just you have to identify and write down in your own words. That's it. Okay. Second point. Assess the likely impact of engineering on the ANA high ethical standard. अब आप अगेन ये आइडेंटिफाई कीजिए बेटा, हाई एथिकल स्टैंडर्ड आपको कहां पे दिया है और ये जो बीपीआर हम इंप्लीमेंट करेंगे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ऑफ हाई एथिकल स्टैंडर्ड पर. अब हाई एथिकल स्टैंडर्ड किस एरिया में, दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. हाँ, बस जो इंपैक्ट पड़ेगा उन एरिया पर वो आपको इमेजिनेशन के थ्रू राइट डाउन करना पड़ेगा. वो चीज क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन हाई एथिकल स्टैंडर्ड पे कौन से एरिया पर इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको दिया हुआ है, बस उसका इंपैक्ट आपको अपने लेवल पर फाइंड आउट करना पड़ेगा. So I'm giving you another 1 minute to find out that para where high ethical standard areas are given, है ना. एक बार वो एरिया पता लग जाए फिर हम अपने इमेजिनेशन से उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम वो लिखेंगे, है ना. अगेन 1 minute I am giving to you. Yes, Soham and Aniket, you have also rightly answered regarding the first requirement part, beta. Very good. Keep it up. In which para, beta, the high ethical standard discussion has been given to you? It has been given to you in the very first para. फर्स्ट पैरा में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया क्लियर हाई एथिकल स्टैंडर्ड रिलेटेड टू वर्कर्स, रिलेटेड टू सप्लायर एंड रिलेटेड टू एनवायरमेंट. वर्कर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बेटा? दो टाइप के वर्कर्स को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. ठीक है. यहां पे चूंकि आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया है, सो देयर विल बी डेफिनेटली निगेटिव इंपैक्ट ऑन द वर्कर्स व्हिच आर नॉट एबल टू सूट टू द अदर रिक्वायरमेंट. जो आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना रहे हैं, कुछ को कॉर्पोरेट में रख रहे हैं, कुछ को चाइनीज सप्लायर के साइड पे भेज रहे हैं, ऑल द एम्प्लॉइज कैन नॉट बी डीम्ड टू द न्यू रोल. सो उन एम्प्लॉइज को फिर आपको ले ऑफ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, रिट्रेच करना पड़ेगा. सो देयर विल बी द एथिकल स्टैंडर्ड विल बी अगेंस्ट देम, है ना, क्योंकि वो आप पूरा आपके भरोसे थे. नाउ यू आर शटिंग डाउन योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सो इट्स अगेंस्ट द एथिकल स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द कंपनी. बट जो स्किल्ड एम्प्लॉय है, नाउ दे विल बी गिवन न्यू रोल, जिनसे उनका अनडाउटेडली स्किल लेवल बढ़ेगा, तो उनका लाइफ का स्टैंडर्ड भी बढ़ना है, बिकॉज हायर स्किल डिमांड मोर पे एंड डेफिनेटली मोर पे विल गिव देम अ बेटर लाइफ. ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है. एनवायरमेंट पे माइट भी इंपैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज द चाइनीज सप्लायर इज फार अवे फ्रॉम अर्थ, इट्स 3750. तो ज्यादा डिटेल नहीं दिया है कितना पॉल्यूशन होगा, क्या होगा, आज का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उससे कितना पॉल्यूशन होता है. बट डेफिनेटली प्राइमा फेसी हम बोल सकते हैं शिपिंग कॉस्ट के, शिपिंग के कारण इतने दूर से हमारे लिए स्पेशली कंटेनर आएगा, तो दैट माइट क्रिएट सम पॉल्यूशन इन द सी लेवल एरिया, है ना. ये हम यहाँ पे बता देंगे. फिर एक कैलकुलेशन हमें करके बताना पड़ेगा, क्या हम ये बीपीआर इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल बेटा. ये आपको बीएनडी की आपकी कॉस्ट दिया हुआ है. सिंपली यू हैव टू जनरेट योर ओन कैलकुलेशन की अगर हम चाइनीज सप्लायर से परचेज करते हैं तो व्हाट विल बी द कॉस्ट. सो कॉस्ट के लिए सबसे पहले 28 युआन को आपको होम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 18. ये आपकी परचेज कॉस्ट आ गई. प्लस इसमें आपको ये शिपिंग कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा. 40,000 रुपी बीएनडी की कॉस्ट है. हम ये मान के चलेंगे कि एवरी टाइम वी विल परचेज 5,000 पेयर टू रिड्यूस अवर कॉस्ट. तो यहां पे आपका 8 बीएनडी आ जाएगा. सर जो भी डेटा आएगा ये आज की हमारी करंट कॉस्ट है, बट इन फ्यूचर
दिस कॉस्ट माइट इंक्रीज ड्यू टू द लेवी ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ 10 और उस पे 1%, इट मींस 11% जो कस्टम ड्यूटी लगेगी उसके कारण हो सकता है हमारी कॉस्ट बढ़ जाए। तो यहां पे फिर आपको ये बताना है दिस इज द करेंट कॉस्ट while the expected cost after applying custom duty might be जो 11% बढ़ जाएगा। तो फिर इस डेटा को we will compare with the manufacturing cost, existing manufacturing cost of 625। सो अगर ये प्रपोजल हमें लोएस्ट कॉस्ट दे रहा है एंड डेफिनेटली कस्टमर इज ऑल्सो डिमांडिंग लोअर प्राइस, तो जो लोअर कॉस्ट है वो हम पास ऑन कर पाएंगे अपने कस्टमर को, तो हम फिर मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हैं। बट वी हैव टू बी वेरी 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 श्योर रिगार्डिंग द क्वालिटी, और जो लीड टाइम है, डिलीवरी टाइम, हम वो मैनेज कर सकते हैं बिकॉज अवर बिजनेस इज सीजनल। कहीं ना कहीं वर्ड लिखा था बेटा, हमारा जो बिजनेस हो सीजनल है, फुटवेयर बिजनेस, तो हम एडवांस में अगर परचेस कर लेंगे तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस मैटर कर रहा है कि कहीं डिले ना हो जाए सप्लायर से, वो इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि सीजनल बिजनेस है। वी विल परचेज बिफोर द सीजन सो दैट वी कैन सप्लाई आवर कस्टमर ऑन द मिनिमम लीड टाइम बेसिस। क्लियर बेटा? बढ़िया क्वेश्चन है ये बीपीआर का, है ना। नाउ आई एम गिविंग यू सम टाइम टू हैव अ रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। पेज नंबर आप देखिए 7 का, एक बार जल्दी से आप ओवरव्यू कर लीजिए 2 से 3 मिनट में, कि आपको समझ में आ जाएगा जो जो अपन ने डिस्कशन किया था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिस्कशन आर सेम एज गिवन इन द स्टडी मटेरियल। सो इट विल गिव कॉन्फिडेंस कि हाँ जैसा हम कंप्लीट करते जा रहे हैं वो इज एज पर द स्टडी मटेरियल कंटेंट। हाँ भाई, ये बेटा पेज नंबर 62 में एक बार आप चेक कर लीजिए इसको, या तो आप इसको, मैं आपको असाइनमेंट दे सकता हूँ। मैंने आपको 2 होमवर्क दिया हूँ बेटा ना, एक तो डर्बी ग्रे वाला जो केस सिनारियो है वो आपको करना है। सेकंड, इसका जो आंसर है, जस्ट मैं चाहूंगा जैसे ही अपना सेशन खत्म होता है, गिव सम एक्स्ट्रा 5 मिनट एंड दिस क्वेश्चन विल बी ओवर फ्रॉम योर एंड। लेकिन अगर आपने इसका सॉल्यूशन पार्ट अभी नहीं पढ़ा, उसको पेंडिंग रख दिया ना, तो फिर जो डिस्कशन है इट माइट गेट वेस्टेड बेटा ना। तो एक बार ये डिस्कशन आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ये पूरा दिया हुआ है आपको बहुत अच्छे से। थर्ड पार्ट में वही कैलकुलेशन किया है कि कितनी कॉस्ट आएगी, इसको परसेंटेज बेसिस पे भी कंपेयर किया गया है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 बेटा। अब अपन नेक्स्ट सेशन से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। उसमें 2 टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एंड द फर्स्ट मेजर टॉपिक इज टारगेट कॉस्टिंग एंड द सेकंड वन इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑल्दो देयर आर मोर 3 to 4 टॉपिक मोर, लेकिन ये 2 टॉपिक बड़े मेन रहेंगे जो नेक्स्ट सेशन से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ओके बेटा, चलिए। होप you are being benefited by the session conducted by the ICI. Thank you beta for watching the session. God bless you. Thank you.